Hello everyone, welcome. This is Ashish Pathak here. Today we will try to understand the mechanism of action of calcium channel blockers, a class of drugs that help in conditions like hypertension and angina. To make this concept crystal clear, I will explain it step by step with a simple animation. So let's get started. Before understanding how calcium channel blockers work, let's first see how smooth muscles contract and what role calcium ions play in this process. We will see in this animation the contraction of smooth muscles involves several key steps. When a stimulus activates smooth muscle cells, voltage gated calcium channels on the membrane open. Calcium ions rush in from outside the cell, increasing intracellular calcium level. This also triggers the release of even more calcium from sarcoplasmic reticulum, the cell's internal calcium store. Now this calcium binds to a protein called calmodulin, calcium modulated protein, to form a complex, and this is an essential step in muscle contraction. This calcium calmodulin complex activates an enzyme called myosin light chain kinase or MLCK. This enzyme phosphorylates myosin light chains, a process that allows myosin to interact with actin filaments. Finally, the interaction between myosin and actin results in muscle contraction. So, when we talk about vascular smooth muscle, so there will be vasoconstriction. Now, let's see what happens when we introduce calcium channel blockers. These drugs block voltage-gated calcium channels on the smooth muscle cell membrane, reducing the entry of extracellular calcium into the cell. With less calcium coming in, intracellular calcium levels drop and less calcium is released from sarcoplasmic reticulum. And because there is not enough calcium, the formation of calcium calmodulin complex is significantly reduced. This results in less activation of MLCK, leading to a reduction in myosin light chain phosphorylation. With fewer phosphorylated myosin molecules, actin-myosin interaction is inhibited and the smooth muscle contraction also inhibited, and which results in vasodilation. एक बार हम इसको फिर से देखते हैं. जब कोई स्टिमुलस स्मूथ मसल सेल्स को एक्टिवेट करता है तो मेम्ब्रेन पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं. कैल्शियम आयन सेल के बाहर से अंदर की तरफ एंटर करते हैं और इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल्स जो रहता है वो बढ़ जाता है. ये प्रोसेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल का इंटरनल कैल्शियम स्टोर है उससे और ज्यादा कैल्शियम रिलीज होने के लिए ट्रिगर करता है. ये कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन नाम के प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, बाइंड करता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन.
तो ये जो कैल्शियम और कैम का कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ये कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जो मायोसिन लाइट चेन को फॉस्फोराइलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, जिससे मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन बढ़ेगा, और मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन बढ़ेगा तो एक्टिन से इंटरेक्शन बढ़ेगा, और एक्टिन से इंटरेक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर वास्कुलर स्मूथ मसल का, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब हम यहां पर देखते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं, इनको ब्लॉक करेंगे, और इनको ब्लॉक करेंगे तो कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाएगी, जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो भी कम हो जाएगा, जिससे कम कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम कम रिलीज होगा तो जो कैल्शियम और कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स के बिना एमएलसीके का एक्टिवेशन कम हो जाएगा, मायोसिन लाइट चेन का फॉस्फोराइलेशन कम होगा, एक्टिन से इंटरेक्शन कम होगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन का ना होना मतलब क्या? रिलैक्सेशन। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किसकी? एंजाइना की ट्रीटमेंट की और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट की, जहां पर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं एक बहुत अच्छे वैसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं। सो दिस वाज अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोडाइलेटर्स के मैकेनिज्म एक्शन के बारे में।